de novo pyrimidine and purine synthesis, they say that various immunosuppressive, antineoplastic, and antibiotic drugs function by interfering with the nucleotide synthesis. How do they do it? Basically, ये जितने भी drugs हैं, they block the DNA replication and the cell proliferation. ठीक है? And how do they do it? कि न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उनको ये ड्रग्स या तो इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से डीएनए और आरएनए प्रिकर्सर्स नहीं बनते, सेल डिवीजन नहीं होती, सेल प्रोलिफरेशन नहीं होती। अल्टीमेटली हमारे पास इस केस में प्यूरीन्स पिरिमिडीन्स नहीं बनेंगे, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी, तो प्रोसेस हॉल्ट हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर इन्होंने सारा प्रोसेस ऑफ pyrimidine based production and purine based production either by reuse from salvage pathway or from the de novo synthesis, इन्होंने सारा प्रोसेस शो किया हुआ है। Now let us just go through it once and then we'll read the details. Pyrimidine based production में they say it requires aspartate, इसको आपने जहन में रखना है। What happens is that glutamine combines with carbon dioxide in the presence of two ATP molecules and carbamoyl phosphate synthetase 2 to form carbamoyl phosphate. Carbamoyl phosphate in the presence of aspartate forms orotic acid, which combines with phosphoribosyl pyrophosphate synthetase to form UMP. Now, where does this PRPP comes from? When the ribose 5-phosphate combines with PRPP, which is phosphoribosyl pyrophosphate synthetase, it forms phosphoribosyl pyrophosphate. ये जो step है, it is common in both of these reactions of the pyrimidine based production and the purine based production. So यहाँ पर we have already synthesized UMP. It gets converted into UDP. UDP may be further converted into CTP, which is cytidine, which is CTP is cytidine triphosphate, UMP is uridine monophosphate, UDP is uridine diphosphate. These are the abbreviations. इनकी full forms you need to keep in mind. ठीक है, UMP is converted into UDP, which may be converted into CTP or deoxy uridine diphosphate in the presence of ribonucleotide reductase. DUDP is converted further into DUMP, which is converted through a series of reactions into DTMP, which is deoxythymidine monophosphate. And we see here कि ये जो रिएक्शन है इसमें बहुत सारी important steps involved है कि in the presence of thymidylate synthetase, DUMP is converted into DTMP. Meanwhile, what is happening is that the N5-N10-methylene THF is converting into dihydrofolate reductase and then is converting into dihydrofolate, which then in the presence of dihydrofolate reductase is converting into tetrahydrofolate, which further gets converted into N5-N10-methylene THF. ये प्रोसेस भी साथ साथ हो रहा है, इसके साथ साथ हमारे पास DTMP की भी प्रोडक्शन हो रही है। Now coming off to purine based production, the first step is the same. Ribose 5-phosphate is converted into PRPP, which is converted through a series of reactions and steps into inosine monophosphate, IMP, which further gets converted into AMP and GMP. AMP is adenosine monophosphate and GMP stands for guanosine monophosphate. Now we are going to look at some of the drugs which are inhibiting the enzymes of these pathways, or they're inhibiting a certain step of this pathway to inhibit the cell proliferation and DNA synthesis and purine and pyrimidine synthesis. तो जब हम pyrimidine synthesis की बात करते हैं तो there is a drug named leflunomide. It inhibits dihydroorotate dehydrogenase. Leflunomide inhibits dihydroorotate dehydrogenase, right? You can see right over here, यहाँ पर भी show किया हुआ है. Then comes 5-fluorouracil and its prodrug capecitabine. Now, what does it do? The 5-fluorouracil, it forms 5-fluorodeoxy
यूरिडीन मोनोफॉस्फेट which inhibits the thymidylate synthase, जिसकी वजह से क्या होता है DTMP की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है. Let me show you. यहाँ पर they have shown right over here this. इस एंजाइम को ये 5FU जो है 5-fluorouracil ये इनहिबिट कर रहा है. सो pyrimidine सिंथेसिस में ये दो इनहिबिटर्स हमने डिस्कस किए. Purine synthesis में specifically हम देखते हैं कि 6-mer-captive purine and its prodrug azathioprine, what do? They inhibit the de novo purine synthesis, guanine phosphoribosyl transferase. Azathioprine is metabolized via the purine degradation pathway and can lead to immunosuppression when administered with xanthine oxidase inhibitor. जब भी purine degradation pathway में xanthine oxidase inhibitor के साथ एजाथायोप्रीन एडमिनिस्टर करते हैं तो वो क्या करता है इम्यूनोसप्रेशन भी कॉज करता है. इसके बाद वी सी के mycophenolate and ribavirin they inhibit inosine monophosphate dehydrogenase, जिसकी वजह से IMP is not further converted into GMP, right? अब ये तो स्पेसिफिकली हमने डिफरेंट पाथवेज में एंजाइम इनहिबिटर्स या जो ड्रग्स थे जो इनहिबिट कर रहे थे उनको पढ़ा. नाउ दे से कि प्यूरीन एंड पिरिमिडीन सिंथेसिस दोनों के अंदर हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करता है. इट इनहिबिट्स राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज. यू कैन सी राइट ओवर हेयर. जब ये राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर देगा तो यूडीपी डीऑक्सी यूडीपी में कन्वर्ट नहीं होगा, फर्दर आगे वाले रिएक्शंस प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. Methotrexate, abbreviated as MTX, trimethoprim, TMP, and pyrimethamine, what do? They inhibit dihydrofolate reductase. ये वाला जो एंजाइम है उसको ये ड्रग्स इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से THF नहीं बनेगा. THF नहीं बनेगा तो वो कन्वर्ट नहीं होगा इनटू N5 N10 methyl THF, जिसकी वजह से हमारे पास this particular reaction it gets stuck over right over here. DTMP is not synthesized. फिर उन्होंने थोड़ी सी डिटेल बताई है कि ह्यूमंस के अंदर डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज होती है बाय मेथोट्रेक्सेट. बैक्टीरिया के अंदर ट्राइमेथोप्रिम प्लेज दिस रोल एंड प्रोटोजोआ के अंदर pyrimethamine it plays this role, right? And one of the most important things we need to remember right over here, okay, we just studied an enzyme carbamoyl phosphate synthetase. So what needs to be kept in mind is that कि pyrimidine synthesis में CPS2 is involved, whereas in the urea cycle, in the urea synthesis CPS1 is involved. ये एंजाइम जो CPS1 है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वर्क करता है, यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व होता है, एंड इट इज प्रेजेंट and found in the liver, whereas the CPS2 which we just studied in this pyrimidine synthesis pathway, ये एंजाइम साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये pyrimidine synthesis के अंदर इन्वॉल्व होता है, and it is found in most of the cells. So this is all about the de novo pyrimidine and purine synthesis.